Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग एवरीवन। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। क्लास की स्ट्रेंथ दिन पे दिन मैं देख रहा हूँ कम हो रही है। बारह बच्चे बताइए, 12 स्टूडेंट फ्रॉम दिस क्लास। Today in every class there were less students. In every class there were less students. Yes, 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 sir. In second period, we have only 8 students. Whose period was yes, it? sir. Sir, Sadhana, grammar. ma'am. अच्छा। So I don't know about first. Sir, in first, there will be, ma'am, sir, 14 or 15 only. And we are doing reasoning. Reasoning में अगर नहीं करेंगे, there is no book of reasoning also. They will not attend the classes. How will they do it? सर जो नहीं गया था उसको खोने दो। ये सर आप पढ़ा दीजिए, जब वो बाद में पूछेंगे सर आपने पढ़ाया नहीं तो सर आप कह देना मैंने पढ़ाया तुम आए नहीं। तो पढ़ाऊंगा ही। चलिए, I'm giving you a question, all of you. So be ready. I think हमने last question ये वाला किया था, village Q is to the north of village P, ये वाला किया था ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next question. Yeah, it is on your screen. Start doing it. Give your answer in the chat box. I want an answer from every student.
think most of you have done it. Yes. No, sir. Writing the question. Excuse me, sir. Take a screenshot. Yes. Sir, done. बताइए. Sir, the chat Just box 1 is second, saying please. that. Is that Sir, my chat box you cannot send a is saying message. that. The person is not in the meeting. Yes, sir. Yes, बेटा sir. दूसरा देखो आप सही से सर्च करो. दो डिवाइसेस से कनेक्टेड था मैं पहले. Now there is only one device, so you search the other one. Sir, एक- there is only one to send message to, only you. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Sir, to the host, we can only send. Send it to me where I am the host. I think she has sent it. Yes, sir. Now sent. Sir, done. Okay. Sir, please tell that. Yes. Let us discuss. A man walks 5 kilometers towards south and then turns right after walking 3 kilometers. Five kilometers. Suppose he started from point A, he walks 5 kilometers towards south and then turns right. Right turn लिया. Right कहाँ पर आएगा अब इसका ये because he is facing south. Right turn लेगा तो कहाँ जाएगा? Towards west. ठीक है? Right turn ले लिया. After walking. West. After walking 3 kilometers, he turns to the left. 3 kilometer walk किया उसने और फिर कहाँ turn ले लिया? Left की तरफ. And then walks 5 kilometers again. 5 kilometer walk किया and now this is his final position. Suppose B. P point मान लिया final. Start किया A से और B पे जाकर के रुक गया. ठीक है? Now in which direction is Sir, Southwest. from the Explain it start? again. I got disconnected. Sorry. You want me to explain it again? Yes, sir. So a man started from point A. He started from point A. He walks 5 kilometers. Then he takes a right turn. Right turn ले लिया. Right turn अगर लेगा तो west की तरफ जाएगा because he is facing south. जब right turn लेगा इधर आ गया. 3 kilometers walk किया right turn लेके. Then he turns left. Left जाएगा then that means again south. And walks 5 kilometers. So this is his final position. B यहाँ पर रुका हुआ है. So you have to tell as compared to A from the starting position. अभी वो कहाँ पर है? किस डायरेक्शन में है? A से अगर कंपेयर करें तो कौन सी डायरेक्शन में खड़ा हुआ है? तो ऐसा कुछ है. This is his starting position A and this is his starting position B. ऐसी तो है. तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है? What is this direction? Southwest. Yes. Southwest. Southwest. इधर साउथ होता है आपका. यहाँ पर क्या होता है? वेस्ट होता है. तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? साउथ वेस्ट. क्लियर? Yes, sir. Sir, I have given Sir, wrong. please tell whose is correct. Yeah. So Navya has given the correct answer. She is the first one to give the answer. Very good, Navya. Answer is absolutely Thank you, correct. sir. Then second is Vidushi. Very good. Then the one who has given the correct answer is Utkarsh. उसके बाद वेद. सर मैंने अभी तक हर आंसर सही दिया है. भव्या करेक्ट आंसर. वेरी गुड. भव्या का कल मैंने नोट किया था एक आधा आंसर गलत था. Today she has given the correct answer. Very good. सक्षम ने बाद में सही किया है. Now his answer is southwest. Correct. Then के बाद जो सही आंसर है that is Angel Gupta. Correct answer southwest. बस. So these are the students who have given the correct answers and still one or two are there जिन्होंने answers नहीं दिए. I want everyone to give the answers. Some students have given wrong answers also, but that is okay. Wrong answer देना ठीक है, but answer ना देना ये बिल्कुल ठीक नहीं है. So I want answer from everyone. Next question. Sharing the screen. Yeah.
I have reasoning, but I lost it. No, sir, I am not founding it. But the previous reasoning test I prepared from it. Start it, all of you. Done, everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir, the second answer I gave, sir, by mistake, sir. I was writing northeast again, sir. But, sir, I by mistake wrote north only. The first is correct. Okay. So, yeah. X started to walk straight towards south. After walking 5 meters, he turned to the left. सिमिलर है काफी इस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है लास्ट
So started walking towards south. Point A से suppose start किया X ने start करा point A से. He started walking towards south. Then he takes a left turn. Left turn ले लिया. 5 meter walk किया था. Left turn लेने के बाद 3 meter walk किया. After this he turned to the right and walked 5 meter again. फिर से right turn ले लिया and 5 meter walk किया. Okay. Now to which direction X is facing? अब कौन सी direction को face कर रहा है ये आपको बताना है. So Sir, final southeast. position तो South. Sir, south. Sir, south. South. A के respect में कौन सी direction में खड़ा है ऐसा नहीं पूछ रहे. He is facing south direction. The answer is south. Sir, he's wrong Sir, also. I thought that they are asking on what position is right now. As compared to A नहीं Sir, बताना है. how can be this? Sir, how can be this southwest? Sir, मतलब Southwest. southeast हो कैसे सकता है सर ये? South है अगर बेटा. वो फेस South. कैसे कर सकता है साउथ ईस्ट? नो सर, आई एम आस्किंग वो साउथ ईस्ट कैसे फेस करेगा? सब जब लाइन कैसी होगी तब वो साउथ ईस्ट फेस कर रहा है. Sorry. क्या कह रहे हो? Sir, meaning sir, when will this X will face south east? मतलब सर कैसे फेस करेगा तो लाइन कैसी होगी? लाइन ऐसी साउथ ईस्ट को कब फेस करेगा. साउथ ईस्ट को फेस करेगा तो लाइन ऐसी होगी. दिस डायरेक्शन. नो सर, अगर फेस कर रहा होगा तो लाइन ऐसी होगी. हाँ ऐसी होगी. साउथ ईस्ट को फेस करेगा. अगर ऐसी लाइन होगी दैट मींस ही इज फेसिंग साउथ ईस्ट. गॉट इट. ओके सर. साउथ ईस्ट मतलब साउथ और ईस्ट के बीच में. ओके सो सर बट आंसर ये भी तो बीच में है. हाँ ये बीच में कहाँ है साउथ और ईस्ट के. कहाँ की तरफ फेस कर रहा है. साउथ की तरफ फेस कर रहा है नहीं कर रहा है. साउथ ईस्ट की तरफ Yes, थोड़ी sir. है तो उसका ओके सर. नीचे क्या होता है. साउथ होता है. तो इज फेसिंग साउथ. थोड़ा 3 मीटर उधर चल गया तो उस मतलब साउथ से अलग हट गया क्या. ऐसा थोड़ी होता है. ओके तो नेक्स्ट मतलब सॉरी लेट मी टेल यू आंसर्स किसके सही है बताऊं. मिश्रा जी sir. हैं नहीं आज मीटिंग में या गायब हैं आज. So answer those who have given the correct answers, they are Angel Gupta first, then Ved. उसके बाद मिश्रा जी तो है मीटिंग में लेकिन मिश्रा जी आपका आंसर गलत है. कोई बात नहीं. भव्या करेक्ट आंसर. आदित्य कुमार करेक्ट आंसर. Mishra ji has corrected his answer and now he has given south. Alind correct answer. Vidushi correct answer. Laksh Kumar correct answer. And Aditi Gupta correct answer. Okay, next question. For this, you don't have options. You just note the question and give your answer on your own. No options are there. Start doing it.
Okay, I hope you all have done. Yes, Yes, sir. sir. Okay, the question is Raj started walking towards west. After walking 10 meters, he turns right and walks 10 meters. Again, he turns right and walks 5 meters. जल्दी से बना दूं मैं याद आएगा तो वेस्ट की तरफ चला 10 meters, राइट टर्न ले लिया, फिर से 10 meters चला, फिर से राइट टर्न ले लिया, then he walks 5 meters, वहां पर रुक गया. So point A से start किया था, B पर रुका हुआ है इस समय. He is standing at point B और अभी इस समय right now he is facing where? He is facing towards east. East. आपसे पूछ रहे हैं बट यहाँ पर पूछा क्या है which direction is towards his left, उसके लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन North. ये नहीं पूछ रहे. He is Sir, north. direction is Sir, towards north. is north. The direction towards his left is north. North is the answer. Okay. So, um, Sir, who gave first? Ved Agarwal gave the answer first. His answer is correct. North. Second one, Aditya Kumar. Correct answer. उसके बाद उत्कर्ष, then Laksh Kumar, Laksham, Mishra ji, then Bhavya. उसके बाद आलिन बेटा गलत आंसर बहुत दे रहे हो, क्या बात है? सर वो गलती हो गई जल्दबाजी सर. मत करो. सर Try गलत to पढ़ लिया. थोड़ा आराम से पेशेंस के साथ करो. Don't try Okay, to sir. be in any kind of hurry. It is more important to give the answer correctly than to give quickly. Okay. उसके बाद Aditi has given the correct answer. Okay. So these are the students who have given the correct answer. Next. Start doing.
Okay, have you all done and written the question in your copies also? Yes, sir. Yes, sir. Sir, the Yes, second sir. time I gave the right answer when I checked it, sir. ठीक है, so consider the second one only, please. Okay. Okay, so yeah, going to stop sharing the screen now. I hope you all have written it. Let's see the question. Mohit has started walking towards south. After walking 15 meters, he turns left. South की तरफ चला 15 meters, turns left and walks 5 meters. 15 meters चलने के बाद 5 meters left turn लिया and then walks 5 meters. Again he turns left. Again he turns left and walks 10 meters. 10 मीटर चला, ठीक है, लेफ्ट टर्न लेने के बाद सपोज ए से चला था बी पर पहुंच गया. Which direction is towards his right? उसके right में Sir, कौन east. सा direction है? The Sir, direction to east. right is Sir, E. yeah, east is the answer. So he is facing north. That means उसके right में क्या होगा? East होगा. Okay, east is the answer. So Sir, what is the right answer? east. East is the right answer. He is facing north after reaching point B. He is facing north. That means उसके right में क्या है? East. Okay, so first one to give the correct answer is Ved. Very good. Again. Then Aditya Kumar second. Third Vidushi correct. Fourth is Lakshya Kumar. भव्या बेटा डिस्टेंस नहीं बतानी है आपको, यहाँ पर बताना है कौन सी डायरेक्शन उसके राइट में है. देन द नेक्स्ट वन इज सक्षम. सक्षम के बाद उत्कर्ष. उत्कर्ष के बाद Sir, that means in the question, but right now they mean that what direction is on his right hand. तो उसके राइट हैंड में कौन सी डायरेक्शन है? ओके, तो ही इज फेसिंग नॉट, तो उसके राइट में I क्या thought that they are asking by right now that here it is he is standing right now. नहीं नहीं नहीं. अच्छा, which direction is towards, नहीं बेटा, this means उसके राइट साइड में कौन सा डायरेक्शन है. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. ओके, so east is the answer. So only these जिनके मैंने नाम लिए थे, these students have given the correct answers. Okay, so I hope you all will practice, do more practice. अच्छा, एक क्वेश्चन मैं जल्दी से पूछ लेता हूँ. All of you listen carefully. Suppose there is a boy named X. He is facing north. North को face कर रहा है. Then he rotates, he moves. मतलब कहीं चला नहीं है वो. He take a turn 180 degrees clockwise. He takes a turn 180 degrees clockwise. Then he takes a turn 45 degrees anti-clockwise. पहले 180 डिग्री नॉर्थ को फेस कर रहा था, 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, then 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा. You have to tell me which direction is he facing now. जल्दी बता दो ऐसे. Southeast. Sir, Sir, southeast. Yes, sir. Southeast. Sir, southeast. Answer is southeast, correct. ठीक है, समझ में आ गया आई थिंक सबको. ईस्ट यहाँ पर है.
तो 180 डिग्री पहले घूमेगा, तो यहाँ दैट मींस ही विल फेस साउथ, और फिर उसके बाद 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो कहाँ पर आ जाएगा, साउथ ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा, Yes, sir. 45 डिग्री साउथ ईस्ट, दैट मींस इधर 45 डिग्री